How are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 2nd and 3rd of October. Session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. In this video, students, we are talking about Secretary of Bhutan, Foreign Secretary of Bhutan's visit to India. Then we will be talking about MSME Seva per 2025. Next thing, we are talking about the small saving interest rates have been kept same by the Ministry of Finance. We will be discussing them, and then we will be talking about a maritime boost that has been given, right, with 27 MOUs that has been signed here. All these things will be very important, so stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. With national affairs, students. First is Foreign Secretary of Bhutan Om Pema Chodden's visit to India from 29 to 30th of September, right? And this was on the invitation of Vikram Misri, the Secretary of the Ministry of External Affairs of India. During his visit, we have signed multiple projects. One such project is your two rail links, right? Let's discuss it. During his visit, the government of India has announced their plan to construct a 89-kilometer long two cross-border rail links with Bhutan at a cost of 4,033 crore rupees. Important. Then apart from this, government has also pledged 10,000 crore rupees in development assistance to Bhutan for their 30th 15-year plan, that is from 13th 5-year plan, that is from 2024 to 2029. Correct. Then apart from this, here you can see the plan, and apart from this, KHPL and PFC, they have also signed a agreement. KHPL is the company of Bhutan and PFC is your Power Finance Corporation of India, right? That is India's NBFC. They have signed the contract worth 4,829 crore rupees, and this will be for financing 600 megawatt of power project, hydropower project that will be established in Bhutan. So take a note of this. So here you can see these projects that we just discussed. So take a note of it. Apart from this, students, here remember which is the country that is hosting the 28th edition of the Universal Postal Congress. It is Dubai, right? Then Himachal Pradesh, they became the 5th fully literate state, right? Then apart from this, recently India has launched the world's first digital tribal university by the name Adi Sanskriti. World's first digital tribal university, right? Adi Sanskriti. Then apart from this, Indian Navy has recently commissioned INS Aravali. It was commissioned where? It was commissioned in Gurugram, Haryana. In Gurugram, Haryana, right? Then TCIL, they have signed a memorandum of understanding with Punjab National Bank in order to strengthen their IT infrastructure. Then apart from this, first Green Hydrogen Research and Development Conference. First Green Hydrogen Research and Development Conference to be held where? In New Delhi, and inaugurated by Prahlad Joshi ji. Next is Ministry of MSME. They have recently celebrated the MSME Seva per 2029 Virasat Se Vikas in Varanasi, UP. See students, first you need to understand is that these MSMEs, they are quite important for the development of India, right? They provide a lot of services and goods that are not just consumed in India but also are exported, right? And even the government of India is heavily betting on these MSMEs by providing them with credit when required for their operations, to making sure that the business doing in India is easy, that is promoting ease of doing business, right? Even various schemes are launched where these MSMEs are promoted, correct? So recently MSMEs, to grow them, right, we need the infrastructure, we need the population, right? We need skilled people, and skilling is also done for them. Even if you remember, for MSMEs, right, as we discussed, these are quite important for them, right? So we need to establish proper infrastructure so that they can also provide employment to the
general public in India and hence enhance the employment in India. Right. So for the same reason here, Ministry of MSME, we have celebrated this MSME Seva Parv, that is Virasat Se Vikas, from 28 to 30th of September, and it was at the Rudraksh International Cooperation and Convention Center in Varanasi, UP. This event aims to bring together communities, institutions and individuals in a collective movement of seva, that is service, cultural pride and enhancing the awareness of India's heritage. Correct. This was a 3-day long exhibition where 130 stalls will be showcasing and selling products to the local or they were selling these products that were made by these local artisans to the general public, as we see. Correct. Take a note of it. And if we talk about UP, who is the Chief Minister of UP? Everyone knows Yogi Adityanath ji. Governor is Anandiben Patel. Capital is Lucknow. And Dudhwa National Park is there. Dudhwa National Park is located here. Right, students, apart from this, tell me where India's first bamboo-based ethanol plant. India's first bamboo-based ethanol plant. Where it has been inaugurated? In Assam. Right, and inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Apart from this, also remember our country India will be hosting the 89th edition of the International Electrotechnical Commission General Meeting scheduled to be held in New Delhi. Next is Ministry of Finance. They have kept the interest rate on small saving schemes unchanged for the third quarter of FY26. If we look at the interest rate here, you can see these are the interest rate that is same here. Kisan Vikas Patra at 7.5%, Public Provident Fund 7.1, Sukanya Samriddhi 8.2, National Savings Certificate 7.7, Senior Citizen Savings Scheme 8.2%, Post Office Monthly Income Scheme 7.4, Mahila Samman Savings Certificate 7.5%. So take a note of this. The repo rate has also been remained same. It has not changed. Next is 27 MOUs worth 66,000 crore rupees exchanged to boost the maritime shipbuilding in Bhavnagar, Gujarat. Students, we have been discussing that the port sector is growing, right? The maritime sector is growing. Multiple MOUs are being signed. Multiple projects are coming in this particular sector so that we can grow this. Why? Because we need proper infrastructure so that we can, if we want to export our goods, right? Because we are focusing on manufacturing. The manufacturing in India is growing. Hence, after consuming those products in India, we will now be able to sell those products to outside world, right? And for that, we need proper infrastructure. Hence, we are seeing such MOUs, such projects coming. So 27 MOUs has been signed. That was Samudra Se Samriddhi, transforming India's maritime sector in Bhavnagar, Gujarat. These projects value more than 66,000 crore rupees. And among them, you can see inauguration of HP LNG regasification terminal. Then Paradeep and Vishakhapatnam Port, Odisha government, SMF, they have signed an MOU to build 150 million ton per annum port here, that is MT PA Port. Then vessel joint venture has been signed between these organizations. Inland Waterways Authority of India and Bihar, they have signed for a water metro project. Shipbuilding clusters of Andhra Pradesh, Odisha, Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, they are coming together, right? Then SCI and ISA, they have signed an MOU for India's steel in shipyard. Lighthouse Museum will be established in Gujarat, right? These are some things that you need to remember, and these are the MOUs that has been signed here, correct? So important one of them is, remember, where will the Lighthouse Museum set up? It will be set up in Gujarat. Correct, and it will be worth 266 crore rupees that will be established here, correct, and it will be at the National Maritime Heritage Complex in Lothal, Gujarat. Moving on, Central Railway, they have completed locomotive trails of the indigenous Kavach system. What is this Kavach system? Kavach system is a anti-collision system, right? It is an anti-collision system. What does this mean is, that means it will prevent two trains from colliding on the tracks, correct? It will be a very beneficial system. It will be promoting safety. Hence, this system, that is Kavach system here, remember, Dharamveer Meena, the general manager of the Central Railways, they have successfully spearheaded this trials of the Kavach system, that is an indigenously developed automatic train protection system at these Somtane, Apta, Jite stations on the Palwal Rohla section of the Mumbai division. Take a note, implemented pan India, correct? And apart from this, students, recently Sarpanch Samvad. This Sarpanch Samvad conclave was hosted by Jal Shakti Ministry. Take a note of this. Our country, India, we have hosted the BIMSTEC Young Leaders Summit, and it was held where? In Guwahati. It was held where? In Guwahati. Next, here you can see this Kavach. What is this? It is a rail safety system, right? And it will be preventing collisions. Next,
Indian Navy, they have signed a 47 crore rupees contract with IRO for underwater drones. See, why are these drones beneficial? Because we don't need any human to go down and operate them, right? We will be able to operate them remotely, and these drones will be quite beneficial for surveying and for the research of the underwater. These drones have the capacity of going up to 300 meters below the surface of water, and these IROV, right? They will be developing these underwater remotely operated vehicles, that is UWROVs. They will be aligning with the Atmanirbhar Bharat of India, and it is to, and these drones, what they will be known? IROV TROT. TROUT. This will be the name of this military grade underwater remotely operated vehicle, and it can go up to a depth of 300 meters. They will be equipped with 4K quality camera, right? Quite high camera, right? And they will be having 10x optical zoom here, right? Moving on. Apart from this, students, recently remember Russia is the country. They have developed a cancer vaccine and they are showing 100% success rate here. Name of that is Antromix. This is the name of the cancer vaccine. Then apart from this, world's first AI generated minister. World's first AI generated minister or AI minister was launched by which country? Albania, and it is to rule out corruption from their country. Next is RBI. They have launched a scheme to speed up the settlement of inoperative accounts, unclaimed deposits. That means all the unclaimed deposits that are lying in the bank accounts, now they will be giving back to the right account holders or the person who will be registered or the person who will be getting those accounts. Say for example, an individual who passed away, right? And the person who he at the time of opening the bank account, he must have named someone nominee there, right? So that particular nominee will be getting that unclaimed account. This is an example here, right? So RBI, they have launched schemes to speed up the settlement of the inoperative accounts or the unclaimed deposits. These deposits, they are expected to be around 67,000 crore rupees, which is a huge amount. And this scheme is available for a period of 1 year, starting from 1st of October 2025 till 30th of September 2025. Important, students, so take a note of this. This is the duration here. Then apart from this, students, remember recently it is Punjab National Bank. They have signed a 21,000 crore rupees MOU. It was signed with the government of Rajasthan, and it was under the Rising Rajasthan initiative. Question can be asked that under Rising Rajasthan initiative, government of Rajasthan, they signed an MOU of how much amount with Punjab National Bank? It was worth 21,000 crore rupees. Then VinFast, this is a electric vehicle manufacturer. They have partnered with State Bank of India in order to finance the electric vehicles they will be manufacturing, and they are setting up a electric vehicle plant in Tamil Nadu, Tuticorin. Next, and here, students, you can see, right, we are talking about the inoperative accounts. If it is up to 4 years, 5% of the amount or 5,000 rupees, whichever is less, will be paid to the bank here, right? Apart from this, 4 to 8 years, 6% of the total amount of 10,000, 8 to 10 years, 7,000 of the amount or 15,000, and so on here, correct? And this incentive payout will be given to the banks, right, for disbursing the unclaimed amount into the person or to the persons who are eligible here. I repeat, if it is up to 4 years, then 5,000 rupees or 5% of the amount will be given to the banks, and it will be a pay structure, correct? It will be benefiting, it will be enhancing the this particular initiative where banks will be taking initiative to settle that amount, correct? Next is SEBI. They have launched Mitra platform to help the investors trace inactive mutual fund portfolios, right? Again, Mitra platform. What is this Mitra? Mitra stands for Mutual Fund Investment Tracing and Retrieval Assistant. This is a new platform that has been designed to help the investors in tracking and reclaiming the inactive or unclaimed mutual fund portfolios. And this platform is jointly managed by 2 qualified registrar and transfer agents that are named CAMS, CAMS. CAMS is your Computer Age Management Service Limited and KFIN Technologies. Correct? Take a note of this. Initially, this framework was scheduled to come into effect from 1st of October 2025, but later on it was deferred to till 1st of October 2025, and now it has been launched here. It will be helping the investors so that they can track the inactive mutual fund portfolios they used to have, but which have been not operated for a long time or they are not registered with it and so on. Correct? Take a note of this, important.
Then apart from this students, there will be 3 milestones here that will be targeted. First milestone here is the stockbrokers are required to apply for a registration of at least one retail algo strategy through an API by 31st of October. Second milestone is that SEBI has directed that complete registration of the retail algo products coming through API and few algo strategies for retail algo will exchange must be completed by 30th of November. Why this is? And third, let's discuss the third also. Further, stockbrokers are required to participate in at least one mock trading session with full functionality by 3rd of January 2026 and submit proof of participation to the exchanges. All this thing is why it is doing. It is doing because of the algo trading. We discussed few days back that algo trading will now be allowed for the retail investors, right? And here you can see that retail algo trading enables the investors to use automated strategies through computer programs which will be offered through APIs, various APIs, right? And initially the framework was scheduled to come into effect from 1st of October. Again, it was deferred till the 1st of October, right? So here multiple guidelines has been launched here, multiple milestones has been launched here, and these algo platforms, these algo trading will be beneficial for the investors to or retail investors in order to make good returns, right? Then apart from this students, if we talk about Mitra platform, coming back here, what is this Mitra platform? This will be helping the investors to track the inactive mutual fund portfolios, right? Moving on. Next is SEBI. They have launched a new scheme DIA to transform the MSME cluster. What is this DIA? Development of Industry Association, right? So recently SEBI, they have launched a new scheme that is DIA, Development of Industry Association. This was launched during the National Conclave on the DIA held in New Delhi, and this initiative will strengthen the MSMEs across India by implementing a cost-effective, innovative and self-sustaining cluster development model. What is cluster? Where multiple these MSMEs are coming together. They are using similar facilities. They are using, say for example, a same warehouse, same factory, and on multiple floors, multiple these MSMEs are working. So this will reduce their cost. Also, they will be getting a better infrastructure there, right? And their cost will be reduced. Hence, their operation cost will be reduced, and it will become more lucrative for these MSMEs to work in such clusters, as they will also form partnership, as their logistic cost will also be reducing. Say for example, on a particular floor, all the MSMEs that are related to similar segment, they are working there, right? So it will be quite beneficial, right? So the Development of Industry Association has been launched here that will transform the MSME cluster, which will be a cost effective, innovative and self-sustaining cluster development model. Right students, take a note of this. So what is the aim here? To transform the industry or to transform the MSME clusters in India into innovative hubs. Moving on. Apart from this students, can you tell me who has been appointed as the interim Prime Minister? Interim Prime Minister of Nepal. Sushila Karki. Take a note of this. Next, RBI has imposed a 32 lakh rupees penalty on Indian Overseas Bank. I repeat, RBI, they have imposed a penalty of how much amount? Of 31.8 lakh rupees on Indian Overseas Bank for its non-compliance with the directions on the priority sector lending targets and classification. Next, RBL Bank, they have partnered with Life Insurance Corporation of India for bancassurance tie-up. What is a bancassurance? When a bank and an insurance company partners together, where insurance company sells the insurance products to the customers of the bank here, right? That is your bancassurance, and this will support the insurance for all by 2047 vision of Government of India. Next is Fatak Secure. They have received IRDAI approval for composite corporate agent license. I repeat, Fatak Pay Insurance Solutions Private Limited, that is a subsidiary of Fatak Pay Digital, which is India's one of the leading digital financial service platform, and they have approved or they have recently received the approval from IRDAI for their composite corporate agent license, right? Take a note of this. Now here they can offer motor, health, accident, life, corporate and consumable insurance to the millions of the under segment workers, specifically to the gig workers here. Next is Amazon Pay. They have launched Payment Ka A to Z in India. This is a simplified digital transaction platform. This initiative will support the Government of India's push towards cashless economy, and this update integrates UPI, credit card, debit card, Amazon Pay balance and Amazon Pay later into a single platform, right? Very important. And this will be promoting the cashless economy, and here various bills will also be able to pay through this platform, right? So it is another kind of a platform where you can use the platform in order to pay through online methods. Next
Next is awards and recognition. Huron Rich India list has been recently released, and today this list has been this time released in partnership with M3M. M3M is a big builder that is operating in Gurugram, Haryana right now, right? And it is one of the prominent builders that you can say right now in Gurugram, Haryana. So recently they have partnered with, or Huron have partnered with M3M here, and they have launched M3M Huron India Rich List. And according to this list, Mukesh Ambani, the chairman of Reliance Industries Limited, is the richest man of India. Correct? Mukesh Ambani and family with a net worth of 9.55 lakh crore rupees, and Gautam Adani and family with a net worth of 8.147 lakh crore rupees on the second position here. If we talk about India's richest women list, Roshni Nadar, the chairperson of HCL, secured the top position as the richest women in the world, or richest women in India, and she was also on the third position. If we are talking about the richest Indian, she secured the third position here, right? Important students, this is the 14th edition of this list. This time it is in partnership with M3M India. Here you can see M3M Huron India Rich List annual ranking that profiles India's wealthiest individuals and families. Moving on to Lieutenant General Virendra Vats has assumed the charge as the Director General of NCC. NCC, what it is? It is your National Cadet Corps, right? He will be succeeding Lieutenant General Gurbiral Pal Singh. Lieutenant General Gurbir Pal Singh, right? He will be succeeding whom? Lieutenant General Virendra Vats will be succeeding Lieutenant General Gurbir Pal Singh here, right? And take a note of this. He has assumed the charge as the 35th Director General of NCC. Next students, acquisitions and mergers here. CCI has approved the acquisition of Jaiprakash Associates by Jindal Power, right? I repeat, Jaiprakash Associate has been acquired by Jindal Power. This acquisition carries high financial stakes due to JAL's substantial debt obligation of almost 57,185 crore rupees. Moving on, next is your International Day of Older Persons observed on 1st of October, and it is to honor the older persons and raise awareness about their rights and well-being. There is a theme here, students: older persons driving local and global action. Our aspiration, our well-being and our right is the theme here. First time observed in 1991. Next, World Vegetarian Day observed on 1st of October to raise awareness about the vegetarian diet, right, and the health and benefits of a plant-based, meat-free lifestyle. Here the word vegetarian, it comes from a Latin word vegetus, right, that means vigorous or lively. Then here you can see, and this was founded by North American Vegetarian Society in 1977, observed on 1st of October. Next is International Coffee Day on 1st of October. Coffee contains caffeine and it is one of the drinks that is liked by almost everyone in today's world. There is a theme here that you need to remember. Theme being embracing collaboration for more than ever here. Then students, these were your important current affairs. Then students, apart from this, for example, if I ask you who has been appointed as the 10th Chief Justice of Manipur High Court, Justice M. Sundar has been sworn in as the 10th Chief Justice of Manipur High Court. Then apart from this, Indian filmmaker Anupama Roy wins the Best Director at the 82nd Venice Film Festival for Songs of Forgotten Trees. Apart from this, ISRO, they have recently transferred the small satellite launch vehicle technology to Hindustan Aeronautics Limited. Then ZAPAD, ZAPAD exercise was recently held in Russia and India took part in this exercise. Then our country India will be also hosting the 5th edition of the Coast Guard Global Summit. It will be held in 2027 in Chennai, right, during Swarnim Jayanti. And in exercise Pacific Reach, in the exercise Pacific Reach, which Indian naval ship took part? It was INS Nistar that took part in this Pacific Reach, and this exercise was held in Singapore. Right students, so these were your important current affairs. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Which public sector bank in India has signed a memorandum of understanding with FSI to launch a customized web-based payment platform named FSI Payment Solution? It is Bank of Baroda. Next, mention the company that launched India's first passive flexicap fund in August, developed in partnership with National Stock Exchange, which combines quality stocks and dynamic market cap allocation based on the momentum. So, which is that? Mention that company. It is DSP Mutual Fund. Next, in August, RBI has imposed a monetary penalty of what amount on ICICI Bank Limited for breaching the regulatory guidelines. So the penalty that was imposed was of 75 lakh rupees.
Next, name the single window gateway proposed by SEBI in August to ease regulatory process for foreign portfolio investors. So, which is it? It is Swagat FI. FI is your foreign investors, right? And Swagat is SEBI single window automatic and generalized access for trusted foreign investors. Next, identify the first miscellaneous NBFC in India to surpass a business turnover of 1 lakh crore rupees in August 2025. It is your Kerala State Financial Enterprise. Next, in August, NABARD Dash and Aqua Exchange Agritech Private Limited has signed a memorandum of understanding aiming to integrate shrimp farmers into the formal credit system by offering low interest, collateral free crop loans, reducing their reliance on the formal lending. So, NABARD along with Kerala State Finance, along with Kerala, not Kerala, along with Andhra Pradesh Gramin Bank, right? I correct, along with Andhra Pradesh Gramin Bank and Aqua Exchange Agritech Private Limited, they have signed this MOU to integrate shrimp farmers into the formal credit system. And here loan disbursement of up to 25 crore rupees in collateral free loans will be disbursed to 100 shrimp farmers within 3 to 6 months with an initial sanction of 1.25 crore rupees to 5 farmers. Next, which bank entered into a strategic partnership with CAMSPay to launch a new digital payment gateway platform targeting Indian enterprises? It is RBL Bank. Next, in August, Paytm Payment Service Limited, they have received in principle approval from RBI to operate what under the Payments and Settlement Act of 2007. It was your what online payment aggregator. Next, RBI, they have allowed NRIs holding special rupee Vostro accounts to invest their surplus rupee balances in what? In government securities and treasury bills. Important news, take a note of this, and this has came into effect immediately. Next, mark the correct statement regarding the introduction of a circular of continuous clearing and settlement realization in CTS by RBI in August 2025. Right, so mark the correct statement. A is right, B is right here. Next, identify the company with which HDFC Ergo General Insurance Company Limited partnered in August to launch an affordable health insurance solution with an aim to expand health insurance coverage to the underserved citizens in India. It is your PhonePe. Next is name the insurance plan launched by SBI Life Insurance Company Limited in August that is designed for growing needs of the customers. It is SBI Life Smart Shield Plus. Then next is National Small Industries Corporation Limited. They have signed a memorandum of understanding with several private sector banks to streamline financing and support the growth of which sector? It is your for which sector? It is for MSME sector, micro, small and medium enterprise. Next is in August, which bank launched a special personal loan scheme for the Agniveers, providing a preferential banking services to the armed force personnel on the occasion of the 79th Independence Day. Which is that bank? It is your State Bank of India. Next, mention the country with whose capital markets regulators provided the license to Kotak Mahindra Limited, allowing the bank to sell investment funds and portfolios to onshore retail investors. It is UAE, United Arab Emirates. Next, you have to find the correct statement regarding the report on UPI transactions released by State Bank of India in August. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong. Next, in collaboration with which payment cards entity did Bank of Maharashtra, they have launched a co-branded credit card to offer customers a premium and rewarding shopping experience across diverse segments. It is SBI Cards. Next, in August, Exim Bank, that is Export and Import Bank of India, has signed a $40 million commercial credit line agreement with the Africa-based ECOWAS Bank for Investment Development to support the development projects across Asia. Next is mention the bank that became the first Indian public sector bank to migrate their corporate website to secure.bank.in in August. So it is your Punjab National Bank that became the first bank to shift to this new domain. Next, mention the bank that launched the UPI services for non-resident external and non-resident ordinary account holders using international mobile number. It is mention that bank. It is AU Small Finance Bank. Next, identify the company that partnered with Thomas Cook India Limited to enable contactless cross-border payments via Google Pay, allowing users to make secure payments at merchant locations worldwide. It is MasterCard. Next, Power Finance Corporation Limited, that is PFC, they have signed a 150 million euro loan agreement with Germany's KfW in August to support India's power distribution under what? It is to
support India's power distribution under revamped distribution sector scheme. Next is Japan International Cooperation Agency JICA. They have announced a $40 million investment in the Global Supply Chain Support Fund with an aim to boost small and medium enterprises that are engaged in the global supply chain across Asia and Africa. Next, mention the company that in August collaborated with Google Pay, a mobile payment application developed by Google to offer personal loans to the eligible users. It is your L&T Finance Limited. Next, mention the name of the gold loan product launched by South Indian Bank in August that is designed to offer quick and convenient access to credit for the customers. It is SIB Gold Express. Next, identify the bank which signed a memorandum of understanding with National Small Industries Corporation to enhance credit access for the MSMEs, aiming to enhance access to comprehensive financial and digital solution. Right? So identify that bank. It is your IndusInd Bank. Next, mention the insurance company that received 2 international certifications. These are the certification for Information Society Management System, and this one is for Business Community Management System. And which is that insurance company that received it? It is Universal Sompo General Insurance Company Limited. This is our homework section. First question is, tell me, IPPB, Indian Post Payment Bank, they marked which foundation day on 1st of September? I have given you the hint. Second question, what was the GST collection in the month of August and July also? Tell me both. Then third question, UPI transaction, they have crossed a mark of how much amount in the month of August? Fourth question, how many countries have started using UPI and which is the latest country that has implemented UPI in their own country? Fifth question, recently tell me which became the first bank to transition to .bank .in domain for security reasons. It was mandated by RBI that all the banks need to shift from to .bank .in domain, which became the first bank to do so. Right? Tell me the name of that bank. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में 2 एंड 3 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी बेनिफिशियल सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ भूटान, ये अभी इंडिया की विजिट पे थे। देन एमएसएमई सेवा पर्व हमने अभी ऑब्जर्व किया। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, उसको अनचेंज रखा गया, कोई चेंज नहीं है। रेपो रेट भी सेम रखा गया, उसको डिस्कस करेंगे। एंड 27 MOUs यहाँ पे साइन किए गए ताकि मैरीटाइम सेक्टर को इंडिया में, शिप बिल्डिंग सेक्टर को इंडिया में बूस्ट किया जा सके। इनको डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा, काफी बेनिफिशियल सेशन रहेगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ भूटान, ये भी इंडिया के विजिट पे थे 29 से 30 सितंबर तक। राइट, यहीं पे अगर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साइन किए गए। 89 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट हैं, 4033 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे भूटान में। इसी के अलावा भूटान में ही यहाँ पे हमें डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे हम भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की। राइट, अंडर देयर 13th 5-year प्लानिंग, जो कि है 2024 से 2029 तक, ताकि वहां पे डेवलपमेंट हम प्रमोट कर सकें। देन KHPL, ये भूटान की कंपनी है, एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इंडिया की NBFC है। इनके द्वारा यहाँ पे 4,829 करोड़ रुपीस का लोन अग्रीमेंट साइन किया गया, ताकि वहां पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम करा जा सके। एंड 600 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेगा। इसी के अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम और चीजें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश 5वीं फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गई है। दुबई, ये भी होस्ट करेंगे। 28th यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस इनके द्वारा होस्ट की गई। राइट, फिर इसी के अलावा अगर हम देखें तो इंडिया के द्वारा पहली वर्ल्ड की, या फिर वर्ल्ड की पहली, नॉट इंडिया की पहली, वर्ल्ड की पहली, वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल
यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई जिसका नाम है आदि संस्कृति, आदि संस्कृति, राइट। फिर इसी के अलावा INS अरावली को लॉन्च किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा में, करेक्ट। फिर इसी के अलावा TCIL इन्होंने एक MOU साइन किया है पंजाब नेशनल बैंक के साथ ताकि इनका आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर हम और बेटर कर सकें। इसी के अलावा प्रहलाद जोशी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, कहां पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा सेलिब्रेट किया गया MSME सेवा पर्व विरासत से विकास, वाराणसी यूपी में इसको सेलिब्रेट किया गया। देखो इंडिया में MSME पे बहुत जोर दिया जाता है, राइट। ये इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों का, इससे हम गुड्स बनाते हैं एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। इंडिया में जब हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं इन दोनों चीज़ों को, फिर हम एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम इनको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो इसी के अलावा देखो इससे रिलेटेड आज की न्यूज़ में ना काफ़ी सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम मैरीटाइम सेक्टर से देखें तो जब हम ये एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को तो हमारा मैरीटाइम सेक्टर बेटर होना चाहिए। मैरीटाइम सेक्टर बेटर कैसे बनेगा, हमारा पोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, वहाँ पे प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, राइट। शिप बिल्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, हमारे प्रॉपर शिप्स होनी चाहिए, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी हमारी होनी चाहिए। उसी के अलावा अगर हम इन गुड्स सर्विसेज को एक्सपोर्ट के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम उनको बना रहे हैं तो प्रॉपर हमारा क्रेडिट सर्विस उनको जाना चाहिए, उन तक जो लोन पहुंच रहे हैं वो तरीके से होने चाहिए, राइट, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसी के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर इनको हम यहीं पे अगर हम देखें तो इनको बहुत सारी चीज़ों के द्वारा सरकार के द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है, राइट, कि ये ग्रो कर सकें। इनमें बाहर का पैसा भी लग रहा है, लोगों का पैसा लग रहा है, इन सब चीज़ों का बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, पर आप अभी इतना ही समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा ये MSME सेवा पर्व विरासत से विकास को 28 से 30 सितंबर तक ऑब्जर्व किया गया। कहां पर, रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर में, जो कि वाराणसी यूपी में है। यहाँ पे कि हम कैसे इनके थ्रू, ये इवेंट का एम था कि कैसे कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स का हम कोलैबोरेटिव एफर्ट ला सकते हैं एंड इंडिया के जो हेरिटेज है उसको फर्दर हम ग्रो करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्क करेंगे। इसी के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा 89th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जनरल मीटिंग को होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। फिर एम्स दिल्ली, ये वो पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन गया इंडिया में जिन्होंने ट्रेन किया डॉक्टर्स को ऑन द विंसी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम। फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा अभी होस्ट किया गया सरपंच संवाद को, कहां पर, सरपंच संवाद कॉन्क्लेव हुई, जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया। फिर इंडिया के द्वारा ही होस्ट किया गया था स्टूडेंट बिम्स्टेक यंग लीडर्स समिट को गुवाहाटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के वो अनचेंज रखे गए फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY26। यहाँ पे जो रेपो रेट है वो भी सेम रखा गया है। तो ये आप कुछ स्कीम्स देख सकते हैं, इंटरेस्ट देख सकते हैं इनके ऊपर, राइट। देन किसान विकास पात्र 7.5, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5% यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद 27 MOUs यहाँ पे साइन किए गए हैं 66,000 करोड़ के मैरीटाइम सेक्टर को शिप बिल्डिंग में बूस्ट देने के लिए इन भावनगर गुजरात। सेम चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो जैसे इनॉग्रेशन ऑफ HP LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पैरादीप एंड विशाखापट्टनम पोर्ट्स, ओडिशा गवर्नमेंट एंड SMFCL इनके द्वारा MOU साइन किया गया 150 मिलियन टन पर एनम पोर्ट को एस्टेब्लिश करने का। देन जॉइंट वेंचर SCI, IOCL, BPCL एंड HPCL का यहाँ पे किया गया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के साथ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन किया। शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स बनाने की बात की गई यहाँ पर। SCI ISN ने MOU साइन किया इंडिया स्टील के लिए इन शिपयार्ड सेक्टर। देन ये इंपॉर्टेंट है, लाइट हाउस म्यूजियम गुजरात में होगा, लोथल में होगा, 266 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा, राइट, ये भी याद रखेंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साइन किए गए। नेक्स्ट, सेंट्रल रेलवेज इन्होंने कंप्लीट किया लोकोमोटिव ट्रायल्स को ऑफ इंडिजीनियस कवच सिस्टम। ये कवच सिस्टम क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे, कवच आपका एक एंटी कोलिजन सिस्टम है। एंटी कोलिजन सिस्टम है कि भाई रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेनें टकराए नहीं आपस में, ये वो सिस्टम ये इंश्योर करता है। काफी बेनिफिशियल है। पहले इसको ट्रायल रन किया गया था, अब ये ट्रायल रन में कामयाब हो गया है, तो अब इसको फर्दर लार्ज स्केल पर हम देखेंगे, पूरे इंडिया में इसको लॉन्च करने का काम किया जाएगा, पैन इंडिया इसको लॉन्च करने का काम करा जाएगा। इसी के अलावा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, रशिया के द्वारा क्लेम करा जा रहा है कि इन्होंने कैंसर वैक्सीन यहाँ पे डेवलप कर लिया है। 100% सक्सेस रेट देखने को मिला इनको ह्यूमन ट्रायल्स में। इस
वैक्सीन का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये है एंट्रोमिक्स, ये इस वैक्सीन का नाम रख सकता है। कैंसर वैक्सीन का 100% सक्सेस यहां पर देखने को मिला है। नेक्स्ट, फिर एक और क्वेश्चन बताओ, अभी एक एआई मिनिस्टर यहां पे लॉन्च किया गया है किस कंट्री के द्वारा, ताकि वहां पे करप्शन को खत्म किया जा सके। तो अल्बानिया के द्वारा यहां पे ये एआई मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करा गया। फिर अगर हम देखें इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस वी आर इंक्लूजन, ये कहां पर हुई, ये 18वां एडिशन था इसका, शारजाह में हमें देखने को मिली। इसी के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने स्टूडेंट्स राजस्थान गवर्नमेंट के साथ अभी एक एमओयू साइन किया। 21,000 करोड़ का ये एमओयू था, ताकि राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने अभी 47 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया IROV के साथ फॉर अंडर वाटर ड्रोन्स, अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के लिए, राइट। ये ड्रोन्स ही होते हैं लेकिन अंडर वाटर ये काम करेंगे। 300 मीटर की डेप्थ में ये ड्रोन्स जा सकेंगे। एंड क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि अब हमें ह्यूमंस को अंदर नहीं भेजना पड़ेगा रिसर्च के लिए। 4K क्वालिटी का ये कैमरा इनके पास रहेगा, 10x ऑप्टिकल जूम रहेगा, जिससे जो सर्वेलेंस है, जो रिसर्च वर्क है अंडर वाटर, वो इजिली कैरी आउट कराया जा सकेगा। साइंटिफिक रिसर्च में काफी ज्यादा यहाँ पे प्रमोशन, एक बूस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो ड्रोन रहेगा, ये जो अनमैन्ड अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, IROV ट्रॉट, TROUT, ये इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड 47 करोड़ की लागत से ये साइन किया गया है। नेक्स्ट है RBI, इन्होंने लॉन्च की स्कीम टू स्पीड अप द सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। देखो इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्या है कि काफी टाइम से वहां पे उस पर काम नहीं हो रहा है, राइट, ऑपरेट नहीं है, वो यूज में नहीं है। अनक्लेम डिपॉजिट क्या हो गया, मान लो किसी, फॉर एग्जांपल किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, राइट, तो वो पैसा वहां पे पड़ा हुआ है। ऐसे पैसे कई बार क्लेम नहीं किए जाते, उनके स्पाउस वगैरह को या फिर जो भी नॉमिनी होते हैं उनको भी नहीं पता होता यहाँ पैसा है। तो ऐसे इनऑपरेटिव अकाउंट्स को, अनक्लेम डिपॉजिट्स को राइटफुल ओनर्स तक वो पैसा पहुंचाने का यहाँ इनिशिएटिव लिया गया RBI के द्वारा। 1 साल तक ये आपका इनिशिएटिव रन करेगा। ये 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक ये इनिशिएटिव रहेगा। एंड एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे बताया जा रहा है 67,000 करोड़ रुपीस के अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टेक अ नोट ऑफ इट। देन 15वें वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन बने, CP राधाकृष्णन, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं महाराष्ट्र के। देन हर्षवर्धन चिटाले जी को अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कहां का, हीरो मोटोकॉर्प का। नेक्स्ट, एंड ये वो अमाउंट है बैंक को जो मिलेगा अगर वो अपना कैरी आउट करते हैं, अगर इस हिसाब के साथ, मतलब 4 साल तक है तो उनको 5% तक का या 5,000 रुपए मिलेंगे पर अकाउंट होल्डर। देन 4 से 8, 8 से 10, 10 से अबव साल के हैं तो वो उस हिसाब से यहाँ पे उनका पे आउट देखने को मिलेगा, जिससे बैंक भी यहाँ पे इनिशिएटिव लेगा कि फर्दर वो ये डिस्पर्स कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया मित्रा प्लेटफॉर्म टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। सी देखो यहाँ पे ये था अनएक्टिव जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, वो अगर किन्होंने आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और वो भूल गए, राइट, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया था, लेकिन उन्हें ये है कि इन्वेस्ट किया था, राइट। तो ऐसे इनएक्टिव म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को इन्वेस्टर्स तक, राइटफुल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया। एंड इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया है मित्रा। मित्रा क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस। ये आपके इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने इनएक्टिव या फिर अनक्लेम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को रिक्लेम कर सके। इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स, अभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए एल्गोरिदम ट्रेडिंग यहाँ पे अप्रूव कर दी गई थी कुछ टाइम पहले, करेक्ट। एंड अब उसके ऊपर टेस्टिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। उसके ऊपर कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस भी आई हैं, कुछ माइलस्टोन्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, 3 माइलस्टोन्स एस्टैब्लिश किए गए हैं जो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखेंगे। एंड फर्दर देन उसके बाद ये यहाँ पे रोल आउट की जाएगी वाइड स्केल पर, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इस एल्गोरिदम ट्रेडिंग का फायदा उठा सके। एल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या होती है, आपने कुछ सेट रूल्स बना दिए कि सो एंड सो ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, ऐसा होगा तो ऐसा करना, तो फिर वो AI आपका जो सॉफ्टवेयर है इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करेगा ना, आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा एंड उस हिसाब से बाय सेल करता रहेगा। आपको बाय सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की मदद से ये एल्गोरिदम ट्रेडिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा सकती है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, SEBI ने लॉन्च की एक नई स्कीम DIA टू ट्रांसफॉर्म द MSME क्लस्टर्स। देखो अभी ये नई स्कीम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन। इससे क्या होगा, MSME क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। जैसे अभी मैं बता रहा था MSMEs को ग्रो करने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग है, राइट, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे एक बिल्डिंग है एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि कई सारे जो MSMEs है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है।
टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एक पूरे फ्लोर पे यहाँ पे या फिर इस पूरी बिल्डिंग में ना सिर्फ टेक्सटाइल से रिलेटेड आपके एमएसएमईज को इनपुट प्रोवाइड करा जाएगा, उनको स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, कैसे कि सबका जो रेंट है वो एक एमएसएमई को पे नहीं करना, बाकी सारे इजीली पे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे उनकी सिडबी इन्होंने लॉन्च की एक नई स्कीम डीआईए टू ट्रांसफॉर्म द एमएसएमई क्लस्टर। देखो अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, तो ये डीआईए लॉन्च किया गया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये क्या काम रहेगा इनका कि एमएसएमई को ग्रो करने का, स्ट्रेंथन करने का काम करेगा, राइट, क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल को प्रमोट करते हुए। देखो क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक बिल्डिंग है और हम एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में कई सारे एमएसएमईज हैं, तो वो सारे एमएसएमईज मान लो एक ही बिल्डिंग में हम उनको साथ में लिए आए, राइट। आपके टेक्सटाइल सेक्टर में मान लो और 2-3 एमएसएमईज हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन इसको इनपुट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी इनका ऑफिस यहाँ पे साथ में लिया है। तो इससे क्या होगा, एक तो ऑफिस शेयरिंग हो गई तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, राइट। लॉजिस्टिक्स कम हो जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल भी उनको साथ के साथ यही मिलता रहेगा। इससे क्या होगा, वो साथ में काम करेंगे तो इनोवेटिव आइडियाज आएंगे एंड ये सस्टेनेबल बिल्डिंग बन जाएगी। ये एक तरीके के क्लस्टर डेवलपमेंट पे आ जाएगी, जिससे क्या होगा, वो ईजिली यहाँ पे फर्दर ग्रो करने में उनको हेल्प मिलेगी एंड साथ में वो ये एमएसएमईज फर्दर बड़े स्केल पे ग्रो होते हुए देखेंगे। तो इसका बहुत बेनिफिट यहां पे देखने को मिलेगा एंड इससे क्या है, क्लस्टर एमएसएमई क्लस्टर को, इनोवेशन हब्स को ग्रो होता हुआ हम यहां पे देख सकते हैं। तो ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आरबीआई ने इंपोज की 32 लाख रुपए की पेनल्टी इंडियन ओवरसीज बैंक पे। डायरेक्टली याद रखेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट एंड क्लासिफिकेशन इनकी तरीके से नहीं हुई, नॉन कंप्लायंस था इसमें, तो उसके बेसिस पे 32 लाख रुपए की पेनल्टी इन पे इंपोज करी गई। फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया की मेंस हॉकी कप ने एशिया में इंडिया ने जीत लिया है। मेंस हॉकी एशिया कप को 4-1 से यहाँ पे साउथ कोरिया को हरा के हमने जीता है। देन काफा नेशंस कप यहाँ पे इंडिया ने जीत लिया है, ओमान को हरा के ब्रॉन्ज मेडल। काफा नेशंस कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई, मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा जीती गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं आरबीएल बैंक। इन्होंने पार्टनर किया एलआईसी के साथ बैंकरेंस पार्टनरशिप के लिए। बैंकरेंस क्या होता है, जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर करती है और इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक, एंड ये किया जा रहा है ताकि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 जो टारगेट है इंडिया का, हम उसको अचीव कर सके। इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे, पहली इंडियन हाई जंपर टू रीच वर्ल्ड चैंपियन फाइनल्स वो कौन है, सर्वेश कुशारे, राइट। फर्स्ट इंडियन हाई जंपर टू रीच द वर्ल्ड चैंपियन फाइनल वो है सर्वेश कुशारे। नेक्स्ट आ जाते हैं फाटक सिक्योर। ये आपका एक इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी है, इनको आईआरडीआई का अप्रूवल मिला है फॉर कंपोजिट कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस। अब क्या होगा, इससे ये यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करा सकेंगे। कैसी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस रहेगी आपकी जैसे मोटर, हेल्थ, एक्सीडेंट, लाइफ, कॉर्पोरेट, कंज्यूमर इंश्योरेंस, ये प्रोवाइड करा सकेंगे टू द मिलियंस ऑफ द अंडरसर्व्ड कम्युनिटी, स्पेशली गिग वर्कर्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं अमेजॉन पे। इन्होंने लॉन्च किया पेमेंट्स का A to Z, इंडिया में इसको लॉन्च किया गया एंड ये अपडेट इंटीग्रेट करेगा यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, अमेजन पे बैलेंस, अमेजन पे लेटर को इनटू अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जैसे पेटीएम हो गया, जैसे आपका फोन पे हो गया, जैसे गूगल पे होगा, सिमिलर काइंड का रहेगा। लॉन्च किया गया है अमेजॉन के द्वारा, राइट। फिर ये अमेजॉन कस्टमर्स को हायर करने के लिए क्या करेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म से आपको ऑफर्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो यूजर्स हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से इनकी तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे। तो पेमेंट्स का A to Z, राइट, ये लॉन्च किया गया है एंड नया कैंपेन भी लॉन्च किया गया जहां पे आयुष्मान खुराना यहाँ पे स्टार कर रहे हैं इस इवेंट में। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। अभी याद रखेंगे M3M इंडिया एक काफी बड़ी कंपनी है, राइट। ये गुरुग्राम हरियाणा में बिल्डर है, काफी इनके प्रोजेक्ट्स भी हैं। इन्होंने ह्यूरन के साथ यहाँ पे मिलकर इस बार लॉन्च किया ह्यूरन रिच लिस्ट को। ये 14th एडिशन है इस रिच लिस्ट का। यहाँ पे मुकेश अंबानी जो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे सामने निकल के आए हैं। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी जी एंड थर्ड पोजीशन पे है रोशनी नादर, राइट। एंड रोशनी नादर जी याद रखेंगे ये रिचेस्ट वीमेन भी सामने निकल के आई हैं, राइट। शी इज द रिचेस्ट वीमेन एंड अगर रिचेस्ट इंडियंस की बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे है। मुकेश अंबानी एंड फैमिली 9.55 लाख करोड़ रुपीज, गौतम अडानी एंड फैमिली 8.147 लाख करोड़ रुपीज एंड रोशनी नादर एंड फैमिली 2.84 लाख करोड़ रुपीज। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी। इन्होंने अज्यूम किया चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के ये डायरेक्टर जनरल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, राइट। इनको ये सक्सीड करेंगे कौन, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। मार्क करेंगे स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं इसके बाद एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पे। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ
सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स बाय जिंदल पावर। काफी हाई डेट है इनका ऑफ ऑलमोस्ट 57,185 करोड़ रुपीस, एंड यहाँ पे जो स्टेक्स है काफी हाई यहाँ पे एक्वायर होते हुए हमें दिखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट्स, ताकि जो ओल्डर पर्संस हैं हम उनकी केयर कर सकें, राइट, एंड उनकी वेलबींग के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। इसकी एक थीम याद रखेंगे, ओल्डर पर्संस ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आर एस्पिरेशंस, आर वेलबींग, आर राइट्स, ये थीम रहेगी। 1991 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। इसी के अलावा ग्रैंड पेरेंट्स डे याद रखेंगे, 8 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 11 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 11 सितंबर को ही नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। 14 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। 15 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंजीनियर्स डे, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। वेजिटेरियन डाइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड इसके बेनिफिट्स एंड प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए। वेजिटेरियन वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था, फ्रॉम द वर्ड वेजिटस, राइट। इसका मीनिंग है लाइवली और विग्रस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर इंटरनेशनल कॉफी डे, 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, कॉफी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, एंड काफी ज्यादा लोगों के द्वारा ये कॉफी को कंज्यूम किया जाता है ऑन डेली बेसिस। कैफीन इसमें हमें एक जो न्यूट्रिएंट होता है, या फिर हम बोले क्या होता है इसमें, तो कैफीन होता है जो आपको एनर्जी बूस्ट देता है एकदम, एंड आपके डे टू डे लाइफ को आपको थोड़ा सा एक किक भी देता है, ताकि आप अपने एनर्जी देता है ताकि अपने काम को पूरा कर सकें। थीम क्या रहेगी, एम्ब्रेसिंग कोलैबोरेशन मोर देन एवर, यहाँ पे ये थीम रहेगी। इसी के अलावा स्टूडेंट्स याद रखेंगे पर्यटन मित्रा या पर्यटन दीदी, ये लॉन्च किया गया था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। देन इंडिया और जापान के द्वारा भी 10 ईयर का रोड मैप डील साइन की गई 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ, ताकि इंडिया में ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। देन आदि वाणी, यह भी एक लॉन्च किया गया इंडिया में, जो कि इंडिया का पहला एआई पावर ट्राइबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। देन ओडिशा ने अभी रैंक किया 5th इन द ग्रीन मोबिलिटी, टारगेट है 1000 इलेक्ट्रिक बसेस को यहाँ पे लॉन्च करना आने वाले कुछ सालों में। देन इसी के अलावा याद रखेंगे पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया, 4th एडिशन रहेगा, यशोभूमि में हमें देखने को मिला था। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड धौलेरा गुजरात में यहाँ पे अपना सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट प्लांट सेटअप कर रही है। इसी के अलावा तमिलनाडु के द्वारा अभी 23 डील सिक्योर करी गई इन जर्मनी, वर्थ 3,800 करोड़ रुपीस, इससे काफी बूस्ट मिलेगा। देन अभी गवर्नमेंट के द्वारा ओन स्क्राइब्स को फेज आउट कर दिया गया इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय 2027। देन डीपीआईआईटी इन्होंने पार्टनर किया फाइजर कंपनी के साथ, ताकि मेटेक स्टार्टअप्स को बूस्ट दिया जा सके, मेटेक स्टार्टअप को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। ग्लोबल इनोवेशन ग्लोबल पीस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो आइसलैंड ने सिक्योर की फर्स्ट पोजीशन, और हमारे इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स में पोजीशन आती है 115, राइट। वहीं पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टियांगशिन चाइना में पार्टिसिपेट किया था इन द एससीओ समिट। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जो कि पहला बैंक बन गया इंडस्ट्री में जिन्होंने एक लॉक एफडी फीचर लॉन्च किया, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके फिक्स डिपॉजिट्स को फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड। तो ये है एक्सिस बैंक के द्वारा, इनकी एप्लीकेशन पे जाके आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन्होंने लॉन्च किया क्या, तो इनके द्वारा अभी शुभ शक्ति लॉन्च किया गया था, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर वीमेन टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। Next, as per the revised co-lending guidelines issued by RBI in August, what is the minimum percentage of each individual loan that regulated entities must retain on their own books under co-lending agreements? So, as per the co-lending guidelines issued by RBI in August, minimum percentage क्या रहेगी, 10% की रहेगी। Next, नेम द प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इन पार्टनरशिप विद सिंग एक्स फॉर NRIs टू सेंड मनी टू देयर फैमिलीज इन इंडिया विद सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस। सो उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ क्या रहेगा, वो है रेमिट फर्स्ट टू इंडिया। नेक्स्ट, मेंशन द अमाउंट ऑफ एंकर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो कि अनाउंस की गई IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इन द एच ड्रीम फंड अगस्त के महीने में टू प्रमोट ग्रीन एंड अफोर्डेबल हाउसिंग इंडिया में। तो उस मेंशन अमाउंट का नाम बताओ, और अमाउंट बताओ कितनी है, $150 मिलियन की रहेगी। नेक्स्ट, किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंडिया में भी एक MOU साइन किया विद फसाई टू लॉन्च अ कस्टमाइज्ड वेब बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फसाई पेमेंट सॉल्यूशन, तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला पैसिव फ्लेक्सी कैप फंड अगस्त के महीने में, डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कंबाइन करता है क्वालिटी ओनली स्टॉक्स को एंड डायनेमिक मार्केट कैप एलोकेशन को बेस्ड ऑन द मोमेंटम। तो उस कंपनी का नाम क्या रहेगा, वो है DSP म्यूचुअल फंड।
फिर आ जाते हैं आरबीआई, इन्होंने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टी कितने अमाउंट की आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पे फॉर ब्रीचिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो 75 लाख रुपए की यहाँ पे मॉनेटरी पेनल्टी इन पे इम्पोज की गई। मूविंग ऑन, नेम द सिंगल विंडो गेटवे जो कि प्रपोज किया गया सेबी के द्वारा अगस्त के महीने में टू ईज द रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो क्या है वो है स्वागत एफआई, राइट, दैट इज स्वागत फॉरेन एफआई इज योर फॉरेन इन्वेस्टर्स, करेक्ट। एंड स्वागत क्या है, स्वागत है आपका सिंगल विंडो गेटवे जिसका नाम है स्वागत, एंड स्वागत हेयर स्टैंड्स फॉर सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये है स्वागत। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मिसलेनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी इन इंडिया जिन्होंने सरपास किया बिजनेस टर्नओवर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज इन अगस्त 2025, तो वो कौन सी है, वो है, नाम बताओ उस कंपनी का, वो है केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइज। नेक्स्ट, अभी नाबार्ड ने किसके साथ, नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया ताकि जो श्रिम्प फार्मर्स है ना उनको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाया जा सके, लो इंटरेस्ट पे उनको लोन मिल सके, कोलेटरल फ्री यहाँ पे लोन दिया जा सके ताकि इनफॉर्मल लैंडिंग पे उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े अपने बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए। 25 करोड़ रुपए का यहाँ पे कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे 100 श्रिम्प फार्मर्स को आने वाले 3 से 6 महीने में, एंड अभी 1.25 करोड़ यहाँ पे 5 फार्मर्स को दिए जा चुके हैं इनिशियल अमाउंट। नेक्स्ट, किस बैंक ने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद कैम्स पे टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म टारगेटिंग इंडियन एंटरप्राइज, तो किस बैंक ने एंटर किया, वो है आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया आरबीआईसी टू ऑपरेट एट व्हाट अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, तो अंडर व्हाट, अंडर ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, आरबीआई ने अलाउ किया एनआरआईज को होल्डिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस रुपी बैलेंसेज, किसमें, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सर्कुलर ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन टीसीएस बाय आरबीआई इन अगस्त, तो यहाँ पे देखें ए सही है, बी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, आइडेंटिफाई द कंपनी विद विच एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया अगस्त के महीने में टू लॉन्च एन अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू द अंडरसर्व्ड सिटीजन्स इन इंडिया, तो ये क्या रहेगा, फोन पे। नेक्स्ट, उस इंश्योरेंस प्लान का नाम बताओ जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया अगस्त के महीने में, दैट इज डिजाइंड फॉर ग्रोइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर, तो वो है एसबीआई लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद सेवरल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ विच सेक्टर, तो स्टेट किस सेक्टर के लिए था ये था आपका एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के लिए। फिर आ जाते हैं, किस बैंक ने लॉन्च किया एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल बैंकिंग सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स ऑन द ओकेजन ऑफ 79th इंडिपेंडेंस डे, तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ, मेंशन द कंट्री हुज कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर्स प्रोवाइड द लाइसेंस टू कोटक महिंद्रा लिमिटेड अलाउइंग द बैंक टू सेल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पोर्टफोलियो टू ऑफशोर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उसका नाम बताओ कौन सी है वो कंपनी, वो है कंट्री, वो है यूएई। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शंस बाय एसबीआई, यहाँ पे ऑप्शन देखें ए सही है, सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, इन कोलैबोरेशन विद विच पेमेंट्स कार्ड एंटिटी डिड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया टू ऑफर कस्टमर्स अ प्रीमियम एंड रिवॉर्डिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस अक्रॉस डाइवर्स सेगमेंट्स, तो ये है एसबीआई कार्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट, अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने साइन किया एक कितना कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट, तो ये $40 मिलियन का कमर्शियल क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट है विद अफ्रीका बेस्ड इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट, ताकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके अक्रॉस अफ्रीका। Next, mention the bank that became the first Indian public sector bank to migrate their corporate website to secure bank.in domain में वो शिफ्ट कर ली गई है, किसके द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक वो पहला इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक बना जिन्होंने इसमें bank.in यहाँ पे डोमेन पे शिफ्ट हुए हैं ये। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने लॉन्च किया यूपीआई सर्विसेज फॉर एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होल्डर्स यूजिंग इंटरनेशनल मोबाइल नंबर, तो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर के थ्रू आप यूपीआई यूज कर सकते हैं बाहर की कंट्री में, आपको इंडियन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इस इंटरनेशनल नंबर से ही यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे, तो ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी यहाँ पे लॉन्च की है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने पार्टनर किया थॉमस कुक के लिमिटेड के साथ इन अगस्त टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स वाया गूगल पे अलाउइंग द यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स एट मर्चेंट लोकेशंस वर्ल्ड वाइड, तो मास्टर कार्ड, राइट, मास्टर कार्ड ने पार्टनर किया थॉमस कुक इंडिया के साथ।
नेक्स्ट आ जाते हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने 150 मिलियन यूरो का लोन अग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के KfW के साथ अगस्त के महीने में टू सपोर्ट इंडियाज पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर व्हाट, अंडर द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। नेक्स्ट है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। इन्होंने अनाउंस किया कितना इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल सप्लाई चेन सपोर्ट फंड विद एन एम टू बूस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट आर एंगेज्ड इन द ग्लोबल सप्लाई चेन अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। तो जी का इन्होंने अनाउंस किया कितना अमाउंट, $40 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने अगस्त में कोलैबोरेट किया गूगल पे के साथ, जो कि एक मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन है, डेवलप की गई है गूगल के द्वारा टू ऑफर पर्सनल लोन्स टू द एलिजिबल यूजर्स। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड, राइट। इन्होंने गूगल पे के साथ पार्टनर किया। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द गोल्ड लोन प्रोडक्ट लॉन्च बाय साउथ इंडियन बैंक इन अगस्त दैट इज डिजाइंड टू ऑफर क्विक एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू द क्रेडिट फॉर द कस्टमर्स। तो ये है SIP गोल्ड एक्सप्रेस। ऑप्शन 4 यहाँ पे ठीक रहेगा। This is our homework section. First question is tell me IPPB Indian Post Payment Bank they marked which foundation day on 1st of September? I have given you the hint. Second question, what was the GST collection in the month of August and July also? Tell me both. Then third question, UPI transaction they have crossed a mark of how much amount in the month of August? Fourth question, how many countries have started using UPI and which is the latest country that has implemented UPI in their own country? Fifth question, recently tell me which became the first bank to transition to .bank .in domain for security reasons. It was mandated by RBI that all the banks need to shift from to .bank .in domain, which became the first bank to do so, right? Tell me the name of that bank. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.